So, you asked me something which I missed. Sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. Sir, firstly, I have to start a few things with such. Firstly, sir, I just want to ask a question regarding how we can increase the self-motivation and ability in youth, as far in the current scenario, as youth is facing a lot of problems and empowerment problems. So, how can we motivate the ability in today's youth? Yeah, Sarah. First of all, that just a good question. That self motivation is something that our youth requires a lot to achieve their goals and their passions and whatever they aspire to have in their life. Self motivation is that fuel, is that energy that can propel them to reach from where they are to where they want to be. So, how they can have that self motivation? That that is more than a desire to have a self motivation. That is a total regime that they have to adopt, and they have to go step by step to burn that desire in them, and that can they can have it through various ways that they can actually. First of all, they need to have a desire to have a growth mindset that there are two type of mindset. There is a growth mindset and there is a fixed mindset. The people who are in the fixed mindset, they think that their abilities and their talents and their uh, capabilities and their traits, they cannot be changed. But when you are in the growth mindset, that is a belief that with efforts, with dedication, with the hard work, you can change your personal skills and you can grow. So first of all, we need to have that thing in mind. We need to adopt that growth mindset that can help us to achieve that. Beside that, there are a number of ways through them they can actually have uh, self motivation. First of all, they need to have clear goals. They should be crystal clear on their goals because it is their goal that can motivate them. If you don't have your crystal clear goals, in coaching terms, they talk about SMART goals. SMART goals are specific, measured, and they are related time bound goals. So, if youth have the goals and they are the SMART goals, they can be the beacon of light for them. They can give them a direction from to where they want to go. And then the next thing that I want to tell you that making goals is easy. Pursuing goals it needs commitment. It is said that motivation can make you start, but it is your determination and your commitment that makes you go running through your goals. So you need to know your why. What you need to achieve is one thing. Why you need to achieve that? Why your goal is important to you? आप इसको हासिल करना क्यों चाहते हैं? उसके साथ जो Exactly. आपके इमोशनल लिंकेज है कि why you want to that is that burning desire and आपका considerable time जो है that should be spent on the why thing of your goals, the emotional attachment of with your goals. तो आपको अपने why के ऊपर देखना है, आपको अपने goals को visualize करना है, क्योंकि visualization is one thing जो आपको क्योंकि हम लोग जो कुछ भी देखते हैं सोचते हैं that all comes into like the pictures and the images in our mind. When you have a very crystal clear image of your achievement, वो जितना ज्यादा vivid होगा, आप जितना उसके साथ relate कर सकेंगे, that will give you a self motivation to go after that. तो ये सारी वो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन को कैसे पैदा कर सकते हैं और कैसे उस डिजायर को बर्निंग रख सकते हैं. इसके अलावा आपको अपने साथ जो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है. आपको ऐसे लोगों के साथ अटैच होने की जरूरत है, ऐसी कम्युनिटीज की जरूरत है जो आपके लिए एम्पावरमेंट का बायस बने. लोग तनकीद बहुत ज्यादा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं,
दिल छोटा करने की बातें करते हैं, लेकिन जो आपके ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, ट्रू स्पोर्टिंग सर्कल है, पॉजिटिव सर्कल है, वो आपके लिए एक एनर्जी बन जाता है, आपके लिए एक मोटिवेशन बन जाता है। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, दोस्त हु आर परस्यूइंग देयर ओन गोल्स, जिनके पास अचीवमेंट है, तो आपके अंदर भी एक सेल्फ मोटिवेशन पैदा हो जाती है कि आपको भी अपने गोल्स के पीछे जाना है। आप जब अपने गोल्स को बना लेते हैं, तो आपको अपने गोल्स से ओवरवेल्म नहीं फील करना चाहिए। इससे भी कई दफा मोटिवेशन जो है वो डाउन हो जाती है, कि जब हमें लगता है कि ये काम जो मैंने सोचा है करने के लिए, ये बहुत बड़ा काम है, दिस इज एन लाइक अपहिल टास्क, तो उससे आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन आ सकती है, आप डर सकते हैं, ओवरवेल्म फील कर सकते हैं। तो अगर आप अपने जो गोल्स हैं उनको सब गोल्स के अंदर तब्दील कर लें, उनको छोटे गोल्स के अंदर तब्दील कर लें, तो भी आपके अंदर मोटिवेशन पैदा हो जाती है। फिर आपको रिवॉर्ड करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि हमारा जो जहन है वो रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम के ऊपर चलता है। तो जब आप अपने लिए कोई रिवॉर्ड्स रखते हैं कि मुझे अगर मैंने जब ये हासिल कर लिया, तो हाउ आई वुड ट्रीट माई सेल्फ, हाउ आई वुड लाइक पैट माई सेल्फ, तो वो जो आपके रिवॉर्ड्स हैं वो भी आपके लिए मोटिवेशन का बायस बनते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसपे मैंने कहा था कि ये एक रिजीम है, इट इज अ फुल फ्लेज रिजीम, कि आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। इट कैन नॉट बी डन थ्रू वर्ड्स ओनली। तो इस तरह की चीजें जो हैं, विद सेल्फ डिसिप्लिन, विद योर स्पोर्ट सिस्टम, सीकिंग इंस्पायरेशन, ये सब चीजें मिल मिलाकर आपके सेल्फ मोटिवेशन का बायस बन सकते हैं। Exactly, sir. It was exactly, sir. Thank you so much for such a guidance. But as there's a question like, there are some strategies that some people can use to motivate themselves to achieve their goals and become successful. As you said that we should be ambitious about our goals and dreams. But sometimes the students, or we can say that sometimes the family backgrounds and sometimes the social issues may not allow you to just grow the way they wanted to. As far like somebody is interested in some the field in the field of social sciences, but due to the pressure, due to the family pressure and the social pressure, they have to choose the fields like IT field and medical field, which have a strong, you can say that, impact over the society in a strong light into the society. But just because of the Mhm. pressure, youth, many students used to back off from the dreams they just wanted to be. So how the parents and how the students and how the teacher can play a vital role in managing the youth towards their in managing the youth to and to go through on to the dreams, basically. You see that there are definitely there are cultural problems and there are cultural issues जिनके लिए हमें we have to face them. Sometimes it is said that if you cannot change it, rather if you don't like something, try to change it. If you cannot change it, you have to accept it. So when there is self motivation in people, they can actually go after their dreams. They have that energy to explore different fields of career where they want to go. As far as it is concerned, that how parents and teachers can do that thing, that is about in, in in the colleges or in the schools where they seek for the aptitude, and they ask that they ask and test the students according to their aptitude, and they guide them to go to their desire or to go to the fields where they want to go. If this happens, this is definitely good for the people, for the students to go after their passions. But when it is not happening there, then of course they have to go somewhere, they have to study somewhere. So this is actually a very different topic, that how teachers and parents can motivate. They cannot motivate you to go after something which is not your passion. But if that happens, you need to find some goodness in what you are forced to do. That is, as I said, it is a different topic, that how to like something which you don't like, which is not your passion. But as far as motivation is concerned, teachers should ask, parents should ask that what passions my kid or my student wants to follow. उनका नैक किस तरफ है, वो किस चीज में अच्छे हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बेस्ड जब असेसमेंट्स होती हैं, तो आपको पता चलता है कि समवन इज गुड इन देयर creative expression, someone is good in their logical expression, someone is good in their
फिलोसफी साइड थिंग, तो इस तरीके से लोग अपने पैशंस को कर सकते हैं। तो अगर हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इस बात का लेवरेज देते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि उनके पैशंस के बारे में पूछा जाए, उनकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स की, उनकी वैल्यू स्ट्रेंथ्स के बारे में पूछा जाए, तो दिस कैन बी अ विन विन गेम एंड दैट कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर द सीकर, फॉर द स्टूडेंट। सर आपकी आवाज खत्म हो गई। आई कांट हियर यू। Can you hear me right now? या यू आर ऑडिबल नाउ। So as far you have just said very briefly about the things, like parents should motivate, don't force the students. But as far I have discussed about social pressure, but in the today's era, in 2023, as the digital media, the social media is the leading platform for the youth, just to show up their skills through the different platforms. Although many of the students, many of the youth are just using the social media, I think that unmeaningfully, because they don't know how to use it and how to use the positive side of social media. The digital skills are being adopted by the youth, but they are not utilizing their abilities of digital abilities correctly and positively. As far recently, I have just been looking towards uh, an incident regarding the artificial intelligence, and they are using that into the negative purposes. Although it's very much useful for the youth for the future, because it has turned all the world realities and all the system into the global village. As well, so what do you say about that? How digital media does it motivate youth to do the work positively in society? Sarab, this is again another very good question that, everything has a positive side and a negative side. Nothing exists without the positive or the negative side simultaneously. And it is about the choice of the seeker that which side they want to adopt. Similarly, the technology that can have the two sides. It can be a promoter of the motivation, promoter of the goodness in the society, and it can be a destroyer as well. So uh, it is about the choice that what how they take it, how they take the technology. As you gave the example of AI, AI can do wonders, and people are doing, and they are getting so much benefit of the AI. But similarly, that is a tool, and that can be used positively and negatively. If we talk about technology, that can be a real help in present scenario in the digital age. There are a lot and lot of stuff that is available on the media and on the digital platforms that can be really helpful and that can really enhance the motivation of students and of the youth. You can access the information, you can access the resources. Technology provides easy access to the vast amount of the informations, knowledge, and the resources that can be really helpful for the individual to pursue their goals and their passions. Similarly, there are online communities, just like uh, Volunteer Force Pakistan and other communities that can help youth to get together and learn from each other. Similarly, there are other communities, whichever passion you want to follow, you can find very good communities. They can get together, they can share ideas, and they can help each other in the form of resources. So, if you have a desire to move forward in the direction of your passion, you have that motivation, you have that propelling energy to go for your dreams. You want to turn your desires into reality, your dreams into reality, then this technology can really help you. In this technology, you can have different apps. They can track your goals. They can gamify your goals, and you can reach out to the mentorship. You can reach out to the autobiography of the people. आप उनसे लर्न कर सकते हैं। आपको वर्चुअल मेंटोरशिप मिलती है, आपको वर्चुअल कोचिंग मिल सकती है, आपको सपोर्ट नेटवर्क यहाँ से मिल सकता है, आपको मोटिवेशन कोर्स, आर्टिकल, ब्लॉग, वीडियोस। आप एक दफा यानी कि एक नियत कर लेते हैं कि मुझे अपने टाइम को वैल्यू देनी है,
I don't have to waste my time in this TikTok thing or this addictive type nature that digital media produces. तो आपके लिए ये चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स जो हैं बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, आपके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, and there is lot free stuff that is available. So this is for a lot of things that digital media or the technology can assist you in moving towards your goals. लेकिन जिस तरह आपने बताया है कि इसको हम गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि सोशल मीडिया और द टेक्नोलॉजी कैन बी अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, and they can actually weaken you in your focus. आपका attention span जो है इससे कम हो रहा है. Research has shown this thing कि over the period लोगों का attention span जो है that is decreasing. और when you have lost your focus and there are a lot of distractions, तो सबसे जो उसका issue होता है आपके अंदर procrastination आ जाती है. You have the goal and but you are unable to move. You are unable to move out of your comfort zone. So that is again a distraction or a problem that is being faced by the youth due to technology. Then in the age of social media, there are a lot of social comparisons that are available. They directly hit your self-esteem. If you are in habit of comparing yourself with other people in terms of your physique, in terms of your finances, your status, or whatever form, so that is a big demotivation, and this is a big distraction and uh, a harm that comes from social media. Then there is, as we say, there is a lot of information that is available. तो उसका दूसरा हिस्सा ये है कि people get overloaded with the information, जिससे आपके अंदर जो है डिसीजन फिटीग आ जाती है, एंड यू आर अनएबल टू डिसाइड वेयर टू गो, व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट टू लर्न, व्हाट नॉट टू लर्न. तो ये भी एक डाउन साइड है जो आपको टेक्नोलॉजी की वजह से मिलती है. और फिर ये जो स्क्रीन एडिक्शन टाइप चीज है, दिस इज वेरी कॉमन. ये सिर्फ बच्चों के अंदर नहीं है, ये बड़ों के अंदर भी आ जाती है, क्योंकि आपको ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर हो गया है. आपको ये गेम्स और ये चीजें जो हैं, ये आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं, स्कोर्स देती हैं, आपके लेवल्स वगैरह आप हो जाते हैं. ये आपको ये जो शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, इनको आप जस्ट स्क्रॉल करते जाते हैं. तो ये सब चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, एंड यू आर अनएबल टू फोकस ऑन योर गोल्स, यू आर अनएबल टू मूव फॉरवर्ड आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. तो ये दोनों साइडें हैं. ये आपके लिए टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प भी कर सकती है और बहुत ज्यादा, इफ यू आर नॉट सेल्फ अवेयर. देखें, ये जो सेल्फ मोटिवेशन है दैट इज वेरी वेरी लिंक्ड विद द सेल्फ अवेयरनेस. ये दोनों यानी एक ही चीज की दो साइडें हैं. सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने बारे में अवेयर करती है कि व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर फीलिंग, हाउ यू आर बिहेविंग, द वे यू आर बिहेविंग. तो अगर आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर हैं, तो फिर आपको पता होगा कि क्या चीज आपके लिए काम कर रही है, क्या नहीं कर रही, आपको क्या परसू करना है, क्या परसू नहीं करना. आपको ये जो डाउन साइड है, सोशल कंपैरिजन की साइड है, डिस्ट्रैक्शन की साइड है, एडिक्टिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो फिर आप इससे बच भी सकते हैं. तो आपको अपने लिए खुद काम करना है. This is my advice for the youth, that if you are not productive, if every day is not better than the yesterday, अगर आप अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए, अपनी फिजिकल वेलबींग के लिए और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए कुछ नहीं कर रहे ऑन डेली बेसिस, इफ आई आस्क समवन कि आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं, आपकी 3 आइडेंटिटीज हैं. यू आर अ इमोशनल बीइंग, यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग एंड अ फिजिकल बीइंग. आपको इन तीनों डायमेंशंस के अंदर रोज की बुनियाद के ऊपर ऑन डेली बेसिस यू नीड टू डू समथिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स. अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो यू आर वेस्टिंग, यू कैन नॉट इवॉल्व. आपकी वर्टिकल ग्रोथ नहीं होगी, आपकी हॉरिजेंटल ग्रोथ होगी, आप इन्फ्लेट करेंगे, वो टाइम जाया हो जाएगा और फिर आप स्टेगनेंट हो जाएंगे. Exactly, sir. Sir, as you have just जी. take the positive side, but now on, as we are looking forward to the things that
the students or the student from the different backgrounds and the different education sectors and all that sort of field lines, they are onto the social media, whether they're influencers or they're on TikTok or on Twitter and on Instagram. uh, the things we always see that the student or the person, everyone, whether a girl, boy, or just a person, old age person, they are doing anything that is basically out of the box, the thing very which is very unnatural, and it has no message. The people used to hit a lot of likes on them and to promote them in one night, although the act has no any generosity or the harmony. But our youth is mostly indulged into that sort of stuff. They don't follow the positive sides, they don't follow the best view of the side. But and as well, the students or the a lot of the teachers and the students used to ask the same, used to say the same thing, that how we can just say that social media is very much powerful and all that sort of things, as far the people who are doing the bad things or who are doing very useless things are getting promoted, and they're making a lot of money and all that things. And the students who are actually making a good content, actually they are delivering something very good, they have no views, they have no promotions, they have no their financial stability. Although the people who are doing the out of the box thing and no message over to that, still they got a lot of things and a lot of intensives from the different companies, from the different people. As we have seen that many of the students recently, many of the TikTokers who used to just make a videos on a music videos, just a music videos, Punjab police has been approached them to make a video regarding that and all that. As for the if the or a very respectful institutions are giving the students like them a better opportunities as compared to the students who are fighting with their degree and a lot of academic stress and a lot of social pressures, and they are doing a hard work, and they in the end they have nothing to achieve. So don't think so that sometimes and at some places or institutions and all the pages and all the companies are playing a vital role in damaging the youth somehow, by promoting them and by giving them places where they don't want to be and where they haven't dreamed for. But the students who dream for and worked hard for that, they have nothing in the end, just because they haven't did the same things just they did. Yes, Sarah, you have rightly pointed out. This is not only the problem of our culture. This is a universal problem, and this is natural. Because why this is natural? Because we seek positive feelings from two ways. One is called pleasure, and other is called joys. Pleasures come from instant gratification. Instant gratification is that we want to see the results then, now, and here. The things that require long-term persistence of the goodness, they require hard work, they need patience, and it is not that both sides do not exist. Still, in the field, in the reality, when we see that people are seeking and running after the likes and running after that, how many people have just clicked that heart button or the like button on us, और मेरे जो रील्स हैं, मेरी जो चीजें हैं, उनको कितना प्ले मिल गया, तो people go for that player-oriented thing. They want to see these shorts. They want to see the entertainment-based things. It's okay. Let them do. But on the other hand, those who are productive, those who are creating something, those who are the real source of evolution, still people are there. Although this is a very sad state of affairs in Pakistan, in our culture, because in our society, values are declining. In our because we don't see policies being implemented. Rather, I don't see good policies being made, but to talk about being implemented. We lack quality teachers, we lack quality students, because it has not happened in a day. It is a gradual decline, and this is what we have to face the music now. But वो कहते हैं ना कि आप अंधेरे का मुकाबला जो है वो अंधेरे को आप अंधेरे से फाइट नहीं करते. You don't fight darkness with the darkness.
You fight darkness with the light. So, howsoever darkness may be there, howsoever there may be hopelessness, but still we need to keep the hope. We need to keep the our youth motivated and go after the solid things and the solid productivity. It is true that people get financial benefits out of TikTok, and they get instant rewards from all this social media, whether they earn it, whether they don't earn it, but they are inclined to do that thing. The main reason is that because we don't have some directions on national level, we don't have that motivation given to our youth. But at the same, we have to start from somewhere. We don't have to complain, or we don't have to push ourselves self against the wall कि ये बहुत गलत है तो अब कुछ नहीं हो सकता. The choice we have will always remain with us. हमारा काम सिर्फ ये है as a coach or as a motivator. I tell people to grow. I inspire them. I tell them that you can go for your dreams, और जो चीज सही है वो सही है. हाँ, अगर आप चॉइस ले लेते हैं कि यू वांट दैट इंस्टेंट फेम या आपको चीप पॉपुलैरिटी चाहिए, दैट कैन बी योर चॉइस. यू कैन सेटल फॉर low values. You can sell yourself cheap. No one can stop you. If money is more important to you, there are so many bad examples that how money can be earned. But you lose your character, you lose your self respect, you lose your values, you lose your dignity in that. But if you go for the dignity, then you will go for the hard work, you will go for the values, you will go for the research and the productivity and the inventions. So, this is what we want our youth to go after. And we don't want our youth to go after those things which are giving instant pleasures or the gratification that that is there. And this is what we need to teach our teachers as well, to motivate our students, that we need to teach this thing to our parents, to how to do positive parenting, how to keep our students and the kids motivated. This is the need of the hour. And the way we are talking today, more and more platforms talking about the positivity and going after the values and about the character strength एंड अमर बिल मारूफ एंड नहीं अनल मनकर, हमें इसकी बात करनी चाहिए. और ठीक है, मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि अंधेरा बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा बुराई है, लेकिन इसका तनासुब हमेशा से ऐसा ही रहा है कि कोई नई चीज नहीं है. फिलोसफी ये कहती है कि अच्छाई का बुराई का तनासुब जो है वो 80-20 का होता है. 80% जो है वो बुराई होती है, हमेशा से होती है और रहेगी, लेकिन 20% जो पॉजिटिविटी है वो बहुत पावरफुल होती है. सिर्फ फर्क इतना होता है कि वो 80 से जब 81% हो जाता है तो डोमिनेंट कलर जो नजर आ रहा होता है वो नेगेटिविटी का नजर आ रहा होता है. तो उससे लगता है कि शायद बहुत बुराई फैल चुकी है. लेकिन सिर्फ अगर आप 20 से 21% के ऊपर चले जाएंगे तो डोमिनेंसी जो है पॉजिटिविटी की हो जाएगी. तो कहते हैं ना कि तारीख के शेर मैं आपको बताना चाह रहा था, तारीख की जुल्मत शब से, शिकवा जुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाए जाते, कि बजाय इसके कि हम इस चीज का शिकवा करें कि क्या गलत है और कैसे प्रमोट हो रहा है. सारा ये हमेशा से चीप काम करने से बहुत सारे पैसे मिल जाया करते हैं, अपने आप को बेचकर भी बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, थोड़े से ठुमके लगा लिए, नाच कर लिया. एंटरटेनमेंट चाहिए लोगों को, उनको देने के लिए और बहुत सारे आ जाएंगे अगर आप नहीं आएंगे. लेकिन अगर आपके अंदर एक मोटिवेशन है कुछ करने की तो नो वन कैन स्टॉप यू. मैंने देखा है लोगों को जिन्होंने अपने लिए कुछ करना है, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वो पूरी पूरी रात बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. दोज पेंटर्स, दो राइटर्स, दोज प्रोग्रामर्स, दोज हु वांट टू डू समथिंग, दे आर डूइंग समथिंग. और ऐसा नहीं है कि उनकी रिकग्निशन नहीं होती है. अल्टीमेटली ये हो नहीं सकता कि सफेद और स्याह कभी बराबर हो जाए. ये हो नहीं सकता कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बराबर हो जाए. We just need to keep, यही जो आज हमारा टॉपिक है, we need to keep our self motivation. We need to keep that faith that ultimately it is going to be rewarded. तो बहरहाल आपकी बात सही है कि हो तो रहा है ऐसा, लेकिन हमें अपना फोकस जो है वो किस तरफ रखना है, ये चॉइस हमेशा हमारे हाथ के अंदर रहेगी.
Exactly, sir. Exactly, You sir. really important points regarding that, and a lot of people who are watching us will have a huge learnings from you. As far before concluding it, I just want to say that some organizations in this era are working very hard. As far as I have to mention, Volunteer Force Pakistan, Mr. Usman Azatullah is working so hard for that, for empowering youth, and the students are having a platform like Volunteer Force Pakistan will definitely reach out to the best places in the future too. Long go process. As far as some of the organizations, and as we have discussed about in the previously, the political instability, the polarization, and all that. That a lot of news that are very fake and revolving onto the social media because we have no evidences, we have no things that we have seen on spot, but just because of social media and a huge following, we believe on the post, on the news. Somehow, do you think that any of the strict rule or something like that should be built for the act like who are spreading a false news regarding any agenda, regarding any institute or any you can say that any perspective regarding Pakistan and all around the countrywide. There are a lot of issues that are being reported onto the social media. Most of them are fake. Most of them are mismanaged, and all that sort of things happening around. So I just want you to just give out three to four major bits that we should follow, and definitely that have a good initiative for us and for the youth that and for the future of Pakistan, for the future youth, as they will grow and they will have a huge benefits from Pakistan. As far in the current scenario, a lot of youth are very much stressive about the current economic condition, and as well on the other side, the digital media is growing very fast and furious, and a lot of students are getting opportunities from digital media too. But somehow the digital media skills are weak somewhere into the youth, just because the institutions are not playing a vital role to just teach them. Because if some student talk about any social media websites, a lot of the family members and a lot of teachers and a lot of the elder persons basically want to mention, they just have to put a pressure that no, you should not have to make any social media account. No, you should not have to use social media. It is very bad and all that. We have set a mindset of youth that social media is something that is very negative, and we cannot open the book. As far it is just like the example like that वो कि हम अगर इस किताब को खोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा. और जब बच्चे को बचपन से ये चीज सिखा दीजिए कि ये गलत है, तो वो सबसे पहले उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होगा कि इसमें ऐसा क्या है जो ये सब इतने से जो है दे आर वेरी मच स्केयर्ड अबाउट दैट. रेस्ट श्योर बजाय कि स्टूडेंट को उसकी पॉजिटिव साइड बताने के, उसका पॉजिटिव यूज बताने के, हमें यहाँ ये बताया जाता है कि फेसबुक है ये तो बहुत बुरी चीज है, या आप इंस्टाग्राम है. फिर वही बात है कि स्टूडेंट्स हैं या डिफरेंट लोग हैं वो उसका मिस यूज करते हैं. वो यूथ जो है वो डिफरेंट फेक आईडीज बनाते हैं. फिर मतलब ये एक लंबा प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से काफी गर्ल्स जो हैं, काफी बॉयज हैं जो कि बहुत मसले फेसेस करते हैं एंड a lot of difficulties. फिर उनके एजुकेशनल करियर के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ जाते हैं. So, what are the three to four major, you can say, techniques that the parents and every elder should follow, that what we can teach to the younger ones, that they will adopt that in a positive manner, in a positive scenario. यहाँ पे मैं आपको दो चीजों की तरफ हाईलाइट करना चाहता हूँ. एक है बच्चों के लिए और एक है यूथ के लिए. ये दो अलग सेगमेंट्स हैं. देखें, बच्चे जो होते हैं उनको आपने रोल मॉडल करना होता है ना. उनका उनका खुद जो लॉजिकल चैम्बर है, लॉजिकल कैपेसिटी है, वो अभी इतनी ज्यादा एनहांस नहीं हुई होती. तो आप उनको रोल मॉडल करते हैं तो वो आपके उस मॉडलिंग के ऊपर चलते हैं. बच्चे वही कहते हैं कि बच्चों को आप जो समझाएंगे वो सिर्फ 8 to 10% है कि वो समझेंगे. उससे आपकी बातें, आपके वर्ड जो हैं वो शायद सिर्फ उनके ऊपर 8% अफेक्ट करते हैं. वो और कहां से सीख रहे हैं? वो आपकी मॉडलिंग से सीख रहे हैं. हाउ दे सी यू, व्हाट यू आर डूइंग. अगर हम आज अपनी यूथ की बात करते हैं तो ये यूथ भी कभी जो है वो बच्चे थे ना, उस वक्त उनके पेरेंट्स ने उनको क्या मॉडल किया था. जिन घरों के अंदर यूथ के अंदर या टीन्स के अंदर बुक्स पढ़ने का रुझान है, तो 90% और मोर जब आप उसको ट्रैक बैक करते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि तुम्हें बुक्स पढ़ने का शौक कहां से आया,
तो उसने कहा बिकॉज ऑफ माई फादर, बिकॉज ऑफ माई मदर। उनकी अपनी छोटी सी लाइब्रेरी है, जब उनका वो अपने आप को टाइम देना चाहते थे तो वो किताब पढ़ते थे, फिर उनकी किताबें पढ़नी शुरू कर दें। एंड सिमिलरली यही इसी तरह ही हैबिट्स जो है वो आगे के आगे चली जाती हैं। तो जब आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये है कि आप उनको समझाने के बजाय आप उनको रोल मॉडल करें। अगर माएँ जो हैं वो खुद ही गॉसिप के अंदर चली जाएंगी, और वो गॉसिप जो है वो आपको भी पता है कि कितनी दफा हम सही बोल रहे होते हैं और कितनी दफा हम सेल्फ पिटी के लिए या अपने आप को वैलिडेट करने के लिए हम एग्जैजरेट भी कर रहे होते हैं और हम ड्रामाटाइज भी उसको कर रहे होते हैं। ये नेचुरल साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब अगर हम खुद अपनी अखलाकी इक़्तिदार और अपनी पर्सनल वैल्यूज का ख्याल करेंगे तो हम एक नई जनरेशन जो है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे वैल्यूज के ऊपर, और फिर उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि मुझे अपना टाइम जो है वो किस चीज के अंदर गुजारना है। जिससे हमने कहा कि टेक्नोलॉजी की तो दोनों साइड्स हैं। टेक्नोलॉजी वर्क्स लाइक वट एवर यू वॉन्ट इट सर्व्स यू। मैंने एक छोटा सा वीडियो किया था, उसके अंदर मैंने और प्रैक्टिकली किया था, आप खुद करके देख लें। आस्क गूगल कि इज कॉफी गुड फॉर माई आई साइट एंड सी द रिजल्ट्स। आपको वो कहेगा कि यस, कॉफी इज गुड फॉर योर आई साइट बिकॉज इट हैज दिस एंड दिस केमिकल एंड इट इज हेल्पफुल फॉर योर विजन और फ्ला। और नीचे जितने आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको ये बताएंगे कि कॉफी इज गुड फॉर योर आई साइट। नाउ इमीडिएटली आप लिखें कि इज कॉफी बैड फॉर माई आई साइट, और गूगल आपको फौरन बताएगा कि यस, कॉफी इज बैड फॉर योर आई साइट, इससे आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और वगैरह वगैरह। तो आपको सोशल मीडिया भी तो आपको इसी तरह ही करता है। आप इंस्टाग्राम के ऊपर देखें, आपको वो सजेशंस वही देगा जो आपकी लाइकिंग है। वट एवर यू आर फोकसिंग ऑन, इट गिव्स यू मोर एंड मोर ऑफ दैट। तो पहले तो आप अपने बच्चों को तरबियत देने के लिए उनका फोकस डेवलप करें। आप उनसे क्वेश्चन इस किस्म के करें कि ओके, आपने क्या लर्न किया है, सर्च द गूगल एंड टेल मी व्हाट इज कैरेक्टर स्ट्रेंथ, सर्च द गूगल एंड टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज, सर्च मी व्हाई वी गो फॉर गुड, व्हाई वी गो फॉर बैड। और इस किस्म के आप उनसे क्वेश्चन करें, डिस्कशन करें, माहौल बनाएं। दे विल स्टार्ट गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनका रुझान जो है वो डिफरेंट होएगा। तो ये तो हो गया इस सेगमेंट के लिए कि बच्चों के लिए क्या करना है। माय पॉइंट इज ऑलवेज देयर कि पेरेंटिंग इज लेस अबाउट किड्स एंड मोर अबाउट पेरेंट्स। पेरेंटिंग कभी बच्चों को समझाने से नहीं आती, वो पेरेंटिंग को students are the same things in सॉरी, मैं आपको अच्छे से सुन नहीं सका, आपकी आवाज थोड़ी खराब आई। चलें, ऐसा है जितनी देर सारा दोबारा बेहतर कनेक्ट कर लेती हैं, हम दूसरे सेगमेंट की बात कर लेते हैं। कि हमने ये बात कर ली कि ये तो थी बच्चों की बात। दूसरा सेगमेंट है एडल्ट्स का और यूथ का। यूथ आर नॉट किड, यूथ हैव देयर ओन चॉइसेस इन देयर हैंड्स। उनको बच्चों की तरह फीड करने की जरूरत नहीं है, उनके सामने रोल मॉडल करने की जरूरत नहीं है। यूथ जो है उसको खुद एम्पावर्ड होना चाहिए, उसको खुद अपने सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। अगर उनको नहीं भी बताया गया कि सही क्या है और गलत क्या है, दे कैन सीक आफ्टर इट। कम से कम अगर उनको अपने कल्चर में, अपनी सोसाइटी के अंदर रोल मॉडल्स नहीं मिल रहे तो क्या उनको दुनिया में भी नहीं मिल रहे? क्या उनको समझ नहीं आ रही है कि क्या चीज है जिससे करने से इज्जत मिलती है, और क्या चीज है जो आपके लिए एडिक्टिव नेचर की हो जाती है? तो बहरहाल, और आप इसके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जिससे मैंने आपसे कहा कि एक दफा आप ट्राई कर लेते हैं, और जब आप शुरू करते हैं तो फिर आपके सामने रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। जस्ट लाइक आई गेव द एग्जांपल ऑफ द गूगल। आप एक दफा अच्छी बात पूछेंगे, वो आपको 10 एग्जांपल्स देगा। आप एक दफा अच्छे ग्रुप के अंदर चले जाएंगे तो इट्स एक्चुअली आपने एक अच्छी एफर्ट की है, अब आपको आइडियाज भी मिलने लग जाएंगे। आप किसी एंटरप्रेन्योर के ग्रुप में चले जाएंगे तो आपको नए एंटरप्रेन्योर के आइडियाज मिलेंगे, रिसर्च के आइडियाज मिलेंगे। बट यू नीड टू ओवरकम योर प्रोक्रास्टिनेशन। आपको अपनी प्लेयर्स की हैबिट को खत्म करने की जरूरत है। आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को खत्म करने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा, जब आप जिम जाते हैं, जो मेरे इस वक्त मेल ऑडियंस सुन रहे होंगे और इवन जो लड़कियां भी सुन रही हैं, जब हम जिम जाते हैं, वेट एक्सरसाइज करते हैं, तो हम बेसिकली अपने अंदर पेन इंड्यूस कर रहे होते हैं। वो वजन उठाना और उसके साथ उसको करते जाना या वॉक करना,
इससे कोई बहुत ज्यादा इंस्टेंटली मजा नहीं आ रहा होता, आप थक भी रहे होते हैं, पसीना भी आ रहा होता है, जोर भी लग रहा होता है, स्टिल यू डू इट, क्योंकि आपको पता है कि इसका रिजल्ट वेल बीइंग के अंदर निकलेगा, इससे मेरी मैं बेहतरी की तरफ चला जाऊंगा, तो यू डू इट। तो इसी तरीके से जब आप अपने कोई भी चीज है, जब आप उसमें ग्रो करने की कोशिश करते हैं, यू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, वट आई एम डूइंग फॉर माई ग्रोथ। फिर मैं वही कहूंगा, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल ग्रोथ और वेलबींग के लिए मैं क्या कर रहा हूं। अगर जवाब ये आता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो फिर अगर आपका नुकसान हो जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे, तो फिर आप किसी पे ब्लेम नहीं दे सकते। और अगर आप कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो भी आपको ग्रोथ माइंडसेट में देना है, देर इज नो फेलियर एज फार एज you seek a learning out of it. There is absolutely no failure. You always grow from the efforts. तो ये मोटिवेशन हमारे अंदर होनी चाहिए। अनम्यूट। Thank you so much. Thank you so much. It is always being acknowledged by especially I just say about my as an individual because it gives me a lot of, as you said, a lot of things that really hits me so hard, and it also gives me a lot of motivation and to just to I think give a strength of hope to just better myself. And as for a lot of students who are just watching us and the people who are just catching up right now, they will also have a huge lessons from you because the successful person like you definitely have a very good experience and as well as a lot of success story and the accomplishment in your life will definitely impact towards the youth. And I hope as a youth we will grow together, and to support each other we should just work with the unity and all the strength, and the mentors like you in the society will definitely bring a huge change. And just because of the people like you who are making the youth motivated and to make them self-esteem, that's why the society is standing right here, because it's been so good. And I am just watching a lot of comments in the favor of yours as well, a lot of students who are just praising you and acknowledging you. It's been a huge success that this is a platform, this is also a digital platform that we both catch upon, but as far this is another view side that the people are following the positive side and just they have taken out their times to watch because of you, because of your dedication, because of your hard work throughout the life. So it's been so honored, and it is being so proud for me to just host you, and it will all be a so pleasure to be conducted the show with you. Thank you very much. Likewise, it's my pleasure. It's my honor to be here, and thank you very much. And thank you for so deep and insightful questions, because it is the questions that give the answer. You have been a good host. Thank you very much for hosting me. Jazakallah khair. Thank you so much. This is so good for all of us to watch you. Hopefully, we'll work for a better future, and try to be a good person from as an individual. To just I can just guarantee myself to just follow up the points that you have shared. And thank you everyone out there who is watching us and listening to us throughout the session. It's been really positive, really appreciative, and a lot of initiatives that you can take from this session. Once again, sir, thank you so much for the precious time. It's always been so pleasure for me. And on the behalf of Volunteer Force Pakistan, I warmly thankful to you regarding your time, regarding all the suggestions and as well your precious time for us. Thank you so much, sir. Thank you so much, Sarah. Thank you very much. Thank you for hosting. Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank Take you. care. Allah Hafiz. Take care. Okay, sir.